Singapore is investing close to 30,000 crore for converting their wastewater into drinking water. सिंगापुर की पॉपुलेशन 42 लाख है और वो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे। जस्ट इमेजिन कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और इंडिया को सिंगापुर बनना है। हमारे पॉलिटिशियन और हमारे सब लोग बात करते हैं इंडिया को सिंगापुर बनाएंगे, शंघाई बनाएंगे, पर हमको वो बनाना है तो किस टाइप ऑफ, वेदर इट इज डेवलप्ड कंट्री और लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया, द प्रॉब्लम्स आर द सेम। इफ द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग यू विल हैव टू डू इट। या आपके पास नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर खत्म होते जा रहा है तो आपको रीयूज के लिए एम्फसिस करना पड़ेगा। Hi everyone. Today, in this episode of Green Shocks, we spoke to the management of Jash Engineering. We were joined by Mr. Pratik Patel, who is the managing director of the company and the CFO. We spoke about industry opportunity, where China is placed in this whole ecosystem. The company is into providing equipments that go into water system management. As complex as it may sound, in this interview, we unpack what each term means and what the company does in very understandable, simple layman terms. What was interesting is that in India, the water we consume, only 2% comes from desalination, whereas in the Middle East and other developed countries, it is nearly 90%. So we understood the revenue opportunity of the company has, the few forward guidance, the capex that they're going to do, and much, much more. So welcome to this episode, yet another episode of Green Shocks. Thank you. Hi, everyone. Welcome to yet another episode of Green Shocks. Today, we are joined by the management, Mr. Pratik Patel, who is the managing director, and Dharminder Jain, who is the CFO of the company. Now, this company has seen tremendous success. I believe the IPO, when it came with the IPO, the share price was around 120 rupees. And after these many years, in the span of 6 years, the share price is around 1,100, 1,200 as of today. And it's because the business has grown. The management has done a tremendous work. So today we will be interacting with them, asking some questions, how they bought the business to where it is today, and what are the expectations going forward? Where do they see opportunities in this space? So, sir, thank you very much for joining us today. Thank you, Sriram, for inviting us for this. And I'm sure we'll be able to meet some of the questions which you have, and I look forward to this interaction. Thank you. Thank you. And Anuj, hi. Hi, Shriram. Hi, Mr. Patel. Hi, Mr. Jain. Thank you, viewers, for liking our YouTube channel. Thank you. Thank you. So, sir, first question is, when we read about your business, some people might think it's complex because it's equipments into water, waste management system, water system. But for a 15-year-old, how would you explain your business? See, basic human need is water. Without water, no one can survive. And once you get the water, it gets converted into wastewater. So if you have got 100 liters of water, 80 liters of water will be converted into wastewater. So we have opportunities in water. While you are getting 100 liters of water, the process of collecting the water, pumping the water, conveyance, treatment, and supplying it to your home, we are involved. And then once you have used that water, you spoil the water by bathing, by drinking, or by urine and things like that. And this goes as wastewater. And we are also involved in that process of wastewater. So for any layman, he has to come across water. Every human being has to come across water. And so we are someone who are associated with every human individual at all stages of his life. Only thing is, he does not see how he gets the water. But we are the conduit, we are the process by which he is getting that water. There are big EPC contractors who does these projects, but they need equipment. And we are the company which supplies all these equipment so that you get a good water quality. And after that, the wastewater should be treated well so that your water resource is not spoiled.
once you've answered the question, there are so many different tangents I can go on with. So, who are your customers? Meaning, you said EPC contractors. Are you supplying to EPC contractors, or are you supplying to, let's say, the government who is declaring the project? So 98% of our supplies is to EPC contractor. And 98% of supplies of EPC contractor is to governments. There is an industrial aspect also of the business, but that is very low. So suppose Reliance is setting up a big plant in Jamnagar, they will need lot of our equipment because without water, any process industry will not work. So an EPC contractor will supply to Reliance and we will supply to EPC contractor. But the major portion of our business is municipal dominated, which is for cities, for drinking water and for wastewater generated by the city. Okay, so you are supplying to EPC contractors and who works with the clients directly. Now you said, now who are the ones who comes up with these projects? Is this government? Is this private companies? Excuse me, can I get your question again? Who are the? So who are the customers? Like EPC contractors are there who provides to the client or the project, who declares the project. Now, who declares the project? Is it the state governments? Is it the private players? Who, like, I just want to understand the ecosystem. So mostly they are municipal bodies, municipal corporations and water supplies boards. So in smaller cities, it will be the municipal bodies. In bigger cities, it will be municipal corporation. And in authority, which has the mandate to do for the whole of Bangalore or whole of Mumbai and things like that. So, Mr. Patel, I mean, you have briefly described the nature of the business. I understand that it is related with water and mostly with water. But what specific part out of the total contract is related to the wastewater treatment is done by your company? See, we supply only equipment to the contractors. So these equipments are water control gates, which are used for control and isolation. These are screens which are used to remove floating waste from coming with the water and wastewater. These are valves which are again controlled for use for water control and flow control. Then in the pipelines, we are doing water hammer control systems, which ensures that your pipeline does not blast or does not cave in. Which is a treatment plant, we are doing equipments which will remove the grit, which will remove the sand, which will remove the grease, which will remove all those things which would be considered as contaminant in the water. So we are supplying all this equipment, and once the water is treated, then the water is supplied to household. This water from household becomes wastewater. Then again it goes to a pumping station. Like a city of the scale of Bombay would have close to 40-50 pumping stations. So the water will go to the pumping station first. There the water again would have a gate, a screen to screen it, pumps, then valves, and then various type of equipment subsequently in the treat process. So we are making all this equipment which helps ensure that the water can be treated and can be discharged later on. Got it, sir. I mean, if I understand it correctly, so in the entire journey of from the generation of wastewater till its treatment, Jash has a role in various steps. This is going to pumping, and in pumping, again we are everywhere till it is going to the treatment plant and discharged to the river or sea. Very well explained, sir. I mean, you have explained it in a very lucid language that everyone will understand. So now that the business is, I think, fairly understood by us. So, I mean, make me understand, sir, whether we are into supplying of those equipments only, or does the work include the installation and the maintenance also? Mostly it is supply, but if the client wants installation and maintenance, we do that also.
majorly do supervision during the installs. Okay, got it, sir. So, sir, make us understand what is the opportunity size. I mean, Indian population is growing, the sizes of cities is growing, the number of cities are growing, and if I understand it correctly, mostly wastewater treatment will be more, deeply penetrated in case of cities, and government has also a thrust on supplying drinking water to each and every village. So, we want to understand what is the opportunity size for us. If you can put some numbers on that as well. So this is a very tricky question because opportunity is unlimited. See, as per the government norms, 130 liter per person has to be supplied for drinking. And as I said, 80% of that converts into wastewater. Now, the present focus of the government is ensuring that every individual gets treated drinking water at his home. So the government is ensuring delivery of water to your home. Then the next phase will start, that is the water which is now delivered to your home has to be collected back and treated before discharging into river. We all read that the rivers have gone bad, Yamuna Kali ho gayi hai, etc., etc. Most of the places, rivers are so bad that the water cannot be taken for drinking directly from the rivers. Why it is so? Because we have not been able to treat our wastewater. आप बोलते हैं कि हमने काफी कुछ ट्रीटमेंट प्लांट का काम करा है, बट अभी भी मेजर सिटीज 50-60% के ऊपर तक ट्रीट नहीं कर रही. जस्ट इमेजिन, लेट मी साइट एन एग्जांपल ऑफ पूना. पूना में अभी नए 14 ट्रीटमेंट प्लांट आ रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 14 आ रहे हैं. सो उसका मतलब क्या हुआ कि आज तक पूना में पूरा ट्रीट नहीं हो रहा था. एंड एज अ रिजल्ट पूना का जो पानी ट्रीटमेंट करे बिना जाता था, वो पूना के पास नदी है उसमें जाता था, वो नदी का पानी गंदा होता था, इससे नदी का पानी गांव में नीचे जा रहा है और कहीं पे पानी को गंदा लगता है. सो ऑल ओवर इंडिया बेसिस यू कैन से क्लोज टू 50% of wastewater is still today not treated. जो ट्रीट हो रहा है वो भी कई जगह पे जो आज नए नॉर्म्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बनाए हैं उसके हिसाब से नहीं हो रहा है. So we have to do a lot of investment in time to come to ensure that जिस हिसाब से यूरोप में नदियां आज क्लीन है, यदि उस लेवल पे पहुंचना है तो हमें बरसों लगते हैं. And I'm not talking of 10 years, 20 years, I'm talking of 30, 40, 50 years लग जाएंगे of huge investment in our ecosystem to ensure कि हम लोग एक अच्छा ड्रिंकिंग वाटर सोर्स को कभी बिगाड़े नहीं. आप इंदौर जैसी सिटी में आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जो नदी सिटी के बीच में से जाती थी वो आज नाले हो गए. जहां पे लोग स्विमिंग करने जाते थे वो नाले हो गए. हमने 50 साल की मॉडर्निटी में ये सारे नदियों को बर्बाद कर दिया है. And we have to invest for years now to ensure that these becomes rivers again. It's not just in developing countries, right? Even the countries, because you said 50-year timeline, it's not that it can be tackled in 5 years, 10 years, because the most developed countries, you take US, they recently in 2022, they came up with Inflation Reduction Act. And in that, $10 billion was allocated just for clean drinking water, wastewater treatment. So it's not just in India, even the developed countries are actually struggling with this. So this is always an ongoing struggle. It's not like, okay, let's say, for example, very blatant example, but electric vehicles, solution will be there in maybe 5 years to 10 years. So there is a stringent timeline. But for drinking water, which is most essential, more than anything, it's a very long process. It's a long-term journey. So on that, yeah, and with the urban population increasing, जो आज बॉम्बे में करीब 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं,
बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे 8-10 साल में, तब तक पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो गई होगी कि बॉम्बे अगेन वुड नीड मोर इन्वेस्टमेंट. सो दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में प्रायोरिटीज अलग है, क्योंकि पहले हमारे पास सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, बाकी सब चीजें नहीं था, इसलिए वाटर वाज नॉट अ वेरी हाई प्रायोरिटी. बट नाउ एवरीवन हैज रियलाइज्ड कि पानी के खराब होने से जो हमारा आउटपुट कम हो रहा है बीमारी से, दैट इज सो हाई दैट इट इज नाउ नो मोर पॉसिबल टू डिफर द इन्वेस्टमेंट. एंड सो हर जगह पे अब इंडिया में प्रोजेक्ट्स आ रहा है. You said one thing, that it is not a priority because no, like we do not know that 14 new wastewater treatment plants were coming up in Pune. You just mentioned it, but you ask us how many flyovers or what the National Highway Authority of India is doing. We know that very well, because these are the things that's on paper, not about the wastewater treatment, not about the kilometers of clean water pipeline that is being constructed, right? That is very well put, sir. That's actually, so on that, I want to ask you, compared to developed countries versus India, look, you have subsidiaries in US, and now you're going to UK, Germany you already had, and you're focusing on exports. So how has been the progress in this forming an infrastructure of clean water in the West compared to India? Everywhere this investment is taking place. Let me give a small example of Singapore. Singapore is investing close to 30,000 crore for converting their wastewater into drinking water. सिंगापुर की पॉपुलेशन 42 लाख है और वो 30,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे थे. जस्ट इमेजिन कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और इंडिया को सिंगापुर बनना है. हमारे पॉलिटिशियन और हमारे सब लोग बात करते हैं इंडिया को सिंगापुर बनाएंगे, शंघाई बनाएंगे, पर हमको वो बनाना है तो किस टाइप के इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि सिंगापुर के अंदर 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हो रहे हैं. सिर्फ सिंगल एक प्रोजेक्ट वास वाटर रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, जिसमें सीवेज वाटर, अवर वेस्ट वाटर जब ट्रीट होकर आएगा आपको मिनरल वाटर जैसी बोतलों में मिलेगा, आप उसको पी सकते हैं. सिंगापुर इज सराउंडेड बाय सी. आज भी वो डिपेंडेंट है मलेशिया पे पानी के लिए. वो चाहते हैं कि ये डिपेंडेंसी नहीं रहे, कोई भी कल उनका नल बंद नहीं कर दे, इसलिए वो लोग इतना सब इन्वेस्ट कर रहे हैं. आज बॉम्बे में इतने सारे लेक्स और डैम्स होने के बावजूद बॉम्बे इज नाउ थिंकिंग ऑफ डेसलिनेशन. ये का पानी लेके उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं. चेन्नई ने एक प्लांट कर दिया है, दूसरा प्लांट 4,000 करोड़ का जस्ट अभी अवार्ड करा है. पूरा मिडिल ईस्ट इस डिसैलिनेशन पे जी रहा है. धीरे धीरे दुनिया में बहुत सारी जगह पे डिसैलिनेशन के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा. So whether it is developed country or less developed country like India, the problems are the same. If the population is growing, you will have to do it. या आपके पास नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर खत्म होते जा रहा है तो आपको रीयूज के लिए एम्फेसिस करना पड़ेगा. वर्ल्ड वाइड अब रीयूज पे एम्फेसाइज होने लग गया है, इसलिए आई डू नॉट सी एनी प्रॉब्लम in limitation of business, whether in the domestic market or international market. Okay, sir, another thing, very technical as well. Recently, the Nuclear Power Corporation of India awarded you nearly 4850 crore project, and I believe this is slightly technically complex because of the screens. I believe there are 38 screens. And there are new standards that have come post what happened in Japan, the Fukushima plant incident. So, are you capable of doing this, or have you done this before? This kind of project? We have not done this kind of project before, but we are capable of doing this because of all the acquisitions which we have made.
जो हमने महा मशीन एंड ऑस्ट्रिया का एक्विजिशन करा था, we have now got the technologies through which we can make such products. And so with that acquisition, and you're saying that now you're technically capable of doing this complex project, are you looking at more opportunities outside? Because I understand that export is your main focus. Your margins are higher in export markets. So does that open a lot of doors to new markets? डेफिनेटली आप उसको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से ना कंपेयर करें। पानी आप ले रहे हो सी में से, और पानी सी में से जब आप लेते हो तो करोजन बिकम्स अ वेरी बिग फैक्टर। डिसैलिनेशन प्लांट में भी वही प्रोसेस है, आपको पानी सी में से लेना है, ठीक है। सो वेदर इट इज अ डिसैलिनेशन और cooling water taken from the sea for nuclear power, the problem, technical problem remains the same, and to address that you need certain technologies, certain designs, which now we have. So we are also now bidding for projects abroad for desalination. Recently we have got a project in Algeria, and we are very near to get a project in Peru. When I say get a project, means order for supply of equipment, not a turnkey project. तो सर मिस्टर पटेल, थोड़ा सा मेरे को समझाइए, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट में जाश इंजीनियरिंग का क्या रोल रहेगा? एंड सेकेंडली, मतलब एक टिपिकल, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट की बात की मुंबई में 4,000 करोड़ का जो डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट जो अवार्ड हुआ है, अगर मान लीजिए उसमें जैश इंजीनियरिंग इज द प्रेफर्ड सप्लायर, जो भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है उसमें, तो कितने वैल्यू का जैश इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सप्लाई करेगा? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डिसैलिनेशन में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। सो डिसैलिनेशन में क्या होता है कि आप सी से पानी लेते हैं, ड्रॉप करते हैं, सो एक पाइपलाइन सी में डाली जाती है, उस पाइपलाइन के थ्रू पानी आता है, और जब शोर पे आते हो तो वो वहां पे एक इनटेक चैम्बर बनता है जिसमें से वो पानी अंदर आता है, एंड देन पंपिंग करके आप उसको रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए ले जाते हैं। सो जो इनटेक चैम्बर रहता है उसमें स्क्रीन्स लगती है, उसमें स्टॉप लॉक गेट्स लगते हैं, उसमें वाल्व्स लगते हैं, ये सब हम बनाते हैं। सो जनरली डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, we would be giving between anywhere from 8 to 12 crore worth of equipment for intake. अब intake के बाद पानी जाता है ट्रीटमेंट में। So जो ट्रीटमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड द टाइप ऑफ वाल्व्स एंड गेट्स यू वांट, few crores of our equipment would be required. So on an average from 8 crore to 15 crore for a project के equipment हम देते हैं। Right, sir. Right, sir. So, sir, since we are discussing orders, तो सर थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि अभी हमारा ऑर्डर बुक कितना है, और उसमें से उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से एक्सपेक्टेड है, मतलब टिपिकली कितना टाइम ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने में लगेगा? So आज हमारी ऑर्डर बुक क्लोज टू 700 करोड़ है, जिसमें हर टाइप के ऑर्डर्स आ गए। द लार्जेस्ट ऑर्डर में भी 50 करोड़ साइज, बट जिसमें 50 लाख और 20 लाख रुपए के भी ऑर्डर्स होते हैं ना। जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं वो तो 2-3 महीने 4 महीने में हो जाते। जो 50 करोड़ का जैसा बड़ा ऑर्डर है उसको 1 साल से लेके 2 साल तक लगता है। सो बट ये जो 1 साल से लेके 2 साल लगता है वो भी लॉट्स में डिलीवर्ड होते हैं। तो जैसे एनपीसीआईएल का प्रोजेक्ट है, हमारी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग टाइम 1 साल हो, तो 1 साल में तीसरे चौथे महीने से डिलीवरी चालू हो जाती है, और वो हर महीने डिलीवरी दे दे के वो प्रोजेक्ट खत्म होता है। सो ये एक साथ सामान नहीं जाता, ये हमेशा टुकड़े टुकड़े में जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा था 36 स्क्रीन है, 36 स्क्रीन, विल बी सप्लाइंग 4 स्क्रीन एट अ टाइम करके हम वेरियस लॉट्स में 7 या 8 लॉट में पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। सो जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्डर। छोटे ऑर्डर में जल्दी होता है, बड़े ऑर्डर में देरी लगती है। तो सर ये 700 करोड़ में से हम कितना एग्जीक्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में? इस साल में हमारा टारगेट है समवेयर बिटवीन 500 करोड़ टू 525 करोड़।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने जो रिसेंटली एक जेवी साइन किया है जर्मन कंपनी के साथ, वो उसका हेडिंग पढ़ के ऐसा लगता है जैसे वो एक डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट रेंज है। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं, उस जेवी में किस दोनों जॉइंट वेंचर पार्टनर का क्या रोल रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट एनविसाज्ड है, किस टाइप की अपॉर्चुनिटी टॉप लाइन ग्रोथ की हम आने वाले सालों में देख सकते इसी जर्मन कंपनी के साथ हमारा एक टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है, मेक डिस्क फिल्टर्स। हाउएवर जब हमने ये प्रोडक्ट बेचना चालू करा इंडियन मार्केट में और जो जर्मन्स लोग आए तब उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत फ्यूचर है, बहुत पोटेंशियल है। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हम इंडिया में बेचना चाहेंगे। ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स में द जर्मन्स आर वर्ल्ड लीडर। कहीं भी देश दुनिया में विदेश में कहीं पे भी जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसमें इन लोगों के प्रोडक्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट, बिकॉज दे आर टेक्निकली द बेस्ट and they were innovators. They were the first to come out with this product in the world. So इन्वेंट का सोचना था कि यदि ये प्रोडक्ट के लिए हम टेक्निकल कोलैबोरेशन जैसे करते हैं और टेक्निकल कोलैबोरेशन की अवधि खत्म हो जाती है, उसके बाद जश ये प्रोडक्ट लेके इंटरनेशनल बाजार में आ जाता है, तो कल उठ के हमने जश को एक कॉम्पिटिटर बना के रख देंगे। इसलिए उनका एक रिक्वेस्ट था कि भाई ये जो प्रोडक्ट है जिसमें हम वर्ल्ड लीडर है उसमें आप हमारे साथ जेवी में ये प्रोड्यूस करिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर 50% जॉइंट वेंचर पार्टनर इन दिस कंपनी। अब ये जो कंपनी है जेवी कंपनी इज अ मार्केटिंग कंपनी, ये मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली जश इंजीनियरिंग लिमिटेड ही करेगी। ये बना के जेवी कंपनी को देगी जो इसका मार्केटिंग करेगी, जो इसका सप्लाई करेगी और जो इसका इंस्टॉलेशन करेगी। ये जो मार्केट साइज है, आई वुड से दिस मार्केट इज नाउ डेवलपिंग एंड आई एक्सपेक्ट दिस टू बी a 50 crore मार्केट इन टाइम टू कम। ओके, तो सर ये जो प्रोडक्ट है ये आप पहले टेक्निकल कोलैबोरेशन में बना रहे थे, अब ये इसको मार्केट जेवी करेगी? नहीं, दूसरा प्रोडक्ट है डिस्क फिल्टर जो हम टेक्निकल कोलैबोरेशन में बना रहे हैं अभी भी। ये एडिशनल प्रोडक्ट्स है जो एरेशन मिक्सिंग टेक्नोलॉजी है इन्वेंट की, ये उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है जिसमें आज हम नहीं है। ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शरी ट्रीटमेंट में जाने वाले प्रोडक्ट्स है जो हम अब बनाएंगे। तो ये हमारे लिए एकदम नए टाइप की प्रोडक्ट रेंज है जिसका मार्केट अपॉर्चुनिटी आप 50 करोड़ रुपए सालाना की देखते हैं। हाँ जी, 50 करोड़ में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट अभी डेवलप हो रहा है। आने वाले सालों में जैसे जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रीयूज में जाएगा, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हम तो सिर्फ 50% ट्रीट कर रहे हैं, रीयूज के मार्केट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है उसको आप रीयूज कर सकते हो, तो रीयूज की टेक्नोलॉजी अलग है, ट्रीटमेंट की टेक्नोलॉजी अलग है, और 50% तो हम ट्रीट ही नहीं कर रहे। तो इस देश को पहले तो 50% जो ट्रीट नहीं कर रहे हैं उसको ट्रीट करना है, और बाद में जो भी ट्रीट हो गया उसको सबको रीयूज करना है, सो दैट हम नया पानी ढूंढे नहीं। सो इट इज समथिंग आई वुड से 50 साल लग जाएंगे हमें उस दिशा में जाते जाते, पर ये टेक्नोलॉजीज आएगी, एंड दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस, एंड धीरे धीरे प्लांट्स आएंगे और जैसे जैसे ये धंधा बढ़ेगा ये 50 करोड़ से ऊपर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट चूंकि इट इज गवर्नमेंट ड्रिवन, द इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट ड्रिवन, वी कैनॉट से कि ये 10 साल में होगा या 50 साल में होगा, एंड दैट इज व्हाई कंजर्वेटिवली वी आर एस्टिमेटिंग एट 50 crore. So, sir, one last question on this JV. What is the mandate of the JV? Can it supply to outside India as well, or is it only for India? See, we are working with a German company. In a German company, they are very much interested in the quality of the product, not only the pricing. The day they feel that the quality of the product is to their standards, they will also be interested in buying from me and selling.
इनफैक्ट आज भी जेवी कंपनी अभी चालू भी नहीं हुई है, क्योंकि उसके लास्ट परमिशंस वगैरह चल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में। पर हम ऑलरेडी 2 करोड़ का सामान जर्मनी बेच रहे हैं इन प्रोडक्ट्स का। So obviously anyone is coming to India, they are also coming for economical pricing. So this filter हो या ये नई प्रोडक्ट्स हो, इसमें सब में ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट टू इन्वेंट चालू कर दिया है 2 साल से। So there will always be opportunity for export even from the JV products. So because you said opportunity for exports now, and your main focus when we read the company statements, we can see that it's exports. You want to increase the pie to 58% exports, I believe. And now, if there is a recession in Europe, because that is a very mainstream thing to say these days, recession in Europe. If recession hits in countries, whether it's US, whether it is Europe, we've seen the governments cut down on the spending. So how does that impact you? श्रीराम जी, एक चीज देखिए आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्प्रेड ग्लोबली, है ना। वी आर नॉट स्पेसिफिक टू वन कंट्री। यस, वी आर वेरी स्पेसिफिक टू अमेरिका, जहां से हमारा सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है। बट वी आर ऑल्सो इन मिडिल ईस्ट, वी आर ऑल्सो इन सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह। सो हम 30 to 40 कंट्रीज में इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें एशियन हो गई, एशियन यानी साउथ ईस्ट एशियन, फार ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट, जिसमें यूरोप हो गया, जिसमें अमेरिका हो गया, जिसमें अफ्रीका हो गया। सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट सब जगह एक साथ रिसेशन आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा मैंने आपको कहा कि वी आर इन इसेंशियल कमोडिटीज। देखिए, कोविड आया, कोविड में आवर बिजनेस ग्रू। क्यों? क्योंकि कोविड में हाथ धो 10 बार दिन में, 2 बार नहाने जाओ। सो कोविड रिजल्टेड इनटू इंक्रीज्ड यूज ऑफ वाटर। सो जो इसेंशियल कमोडिटीज रहता है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कितना भी रिसेशन वर्ल्ड में आ जाए, पानी पीना पड़ेगा। पानी के बिना आप सर्वाइव नहीं करोगे। ये जरूर हो सकता है कि बहुत तेजी से जो बिजनेस जा रहा था वो स्लो डाउन हो जाए, बंद नहीं होगा। No, absolutely. It's a very basic, like essential thing. इसके बिना आप एक बार ऑयल के बिना चल सकते हो, आप पानी के बिना नहीं चल सकते। Correct. And look, talking about recession also, recession impacts commodity prices. Okay. Now your commodities, what are your commodities? Copper, aluminum, plastic, and iron, cast iron. So Stainless steel, iron, yes. how do you, because look, I'm seeing your margins in 2022, I'm seeing your margins in 2023. In fact, it's almost flat, right? So how were you able to maintain margins? Because when we're looking at companies, irrespective of sector, when we look at manufacturing companies, they've been really hit because commodity price increased. You faced an inventory loss because you acquired commodities at the high price, because you have to. So how were you able to maintain margins during this time? See, it is a fact कि commodity prices बढ़ते हैं तो सबको हिलाती है, हमको भी हिलाती है। If you see our 2021-22 balance sheet, we have got a hit. ऐसा नहीं है हमको नहीं हुआ है, but the amount of hit we got was much lesser. Now one has to understand why so. देखिए, यदि मैं इंडिया में ही बिजनेस करता होता तो मेरे को हिट बहुत ज्यादा आई होती। बट जब भी कमोडिटी शॉक होता है, आप देखेंगे कि रूपी बिकम्स वीकर इन कंपैरिजन टू डॉलर, इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द फॉरेन करेंसीज। मैं आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं सिंगापुर का। जब हमने 2019-20 में सिंगापुर के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए हमने प्राइसेस दिए थे, और आज जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 30 to 40% इंक्रीज प्राइसेस में हो गए। तो कोई भी कंपनी नहीं, वो
ये तो कोई भी कंपनी 30 to 40% रॉ मटेरियल प्राइसेस को कवर नहीं कर सकता। बट उस वक्त जब हमने सिंगापुर डॉलर कंसीडर करा था वो 45-46 रुपीस पे था। टुडे सेम सिंगापुर डॉलर इज एट 61-62। तो 40 से 45% सिंगापुर डॉलर के अंदर भी फर्क आ गया। तो यदि मेरे रॉ मटेरियल में 30-40% फर्क आया है और सिंगापुर डॉलर में 40-45% आया है तो मैं तो बेनिफिट ही कर रहा हूं। सो यदि मेरा 55-60% एक्सपोर्ट नहीं होता और मैं डोमेस्टिक बिजनेस में ही होता तो माय हिट वुड बी मच हायर। बट बिकॉज आई एम इन एक्सपोर्ट मार्केट प्रीडोमिनेटली तो हमने डोमेस्टिक में ठोकर खाई, बट वी रिकवर्ड अवर मनी फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। ओके सो और यही जब उल्टा होता है, अब prices are going down. So in 23 you have seen a marked improvement in our profitability. 22-23 में, ठीक है? It is because that जैसे प्राइस ऊपर गए तो हमने हमारे प्रोजेक्ट कॉस्टिंग सब हायर प्राइस से करा। अब प्राइस नीचे जा रहे हैं तो जो हायर प्राइस से लास्ट 1 साल 1.5 साल में ऑर्डर्स मिले थे उसका रॉ मटेरियल हम कम प्राइस में खरीद रहे। So it benefits me. However, at the same time, I am lucky that dollar नीचे नहीं गया है, सिंगापुर डॉलर नीचे नहीं गया है, तो I get high price, high dollar price and high Singapore dollar price का benefit in export, and domestic में I get the benefit of low raw material prices. So to summarize, even actually Dharmender sir can also help in this. When a recession happens, or if, okay, let's say if, sorry, opposite of recession, when it's a boom, when commodity prices are increasing, you frequently see that rupee depreciates, everyone goes to, let's say, dollar assets, and the USD, Singapore dollar, Swiss franc, whatever the currency, it appreciates. So because you have businesses, let's say 50% is in exports, 52% is in exports. When that subsidiary earns the dollars or the euros or the Singapore dollars, and when you report in India, you transact to India, and you're transacting it at a lower rupee base, so that higher rupees, basically, you're reporting much higher revenues, much higher income. So he's saying, despite the rise in material cost, the change in forex, depreciation of rupee, is helping you, right? Exactly. Yes. So now, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि our production is predominantly in India. yeah, तो बाहर हम बना के सामान बेचते हैं और हमारी सब्सिडीज वही सामान में कुछ वैल्यू एडिशन करके आगे देती। okay. Now, it is regarding finance. So, and bit of forward looking as well. You have nearly 700 crores of order book, very healthy pipeline, and you are guiding, let's say, your expectation for FY24 is to clock in 525 crores of revenue, I believe. Yes. Now, on that, what are the margins you are expecting? And how are you so confident? Like, on what basis are you forecasting that? Let's say infra companies, they make a good forecast. Textile companies, it's very difficult for them to make a forecast. So what gives you the ability to forecast revenues based on order book? And what are the margins that you expect? Your order book is 700 crore plus whatever we have produced till date. Now, we already have more than 300 crore ke drawing approvals and clearances. So, next 2 से 3 महीने में we are expecting another 150 crore worth of clearances. So, we expect that by September, October, we will have more than 500 crore of manufacturing clearances from 700 crore of orders. क्योंकि मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंसेस दे दिए क्लाइंट ने, उसका मतलब है दे वांट अस टू मैन्युफैक्चर।
सो वो सामान हम बना के यदि मार्च तक हम डिलीवर कर सकते हैं तो ये सब मेरे रेवेन्यू में आए. सो वी हैव अ फेयर आइडिया कि भाई ये अचीवेबल है. ओनली प्रॉब्लम इज कि भाई कहीं कभी कुछ ऐसा हो गया कि उस कंट्री में या उस ऑर्डर में प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल हो सकता है प्रोजेक्शन से. बट इफ यू सी अवर लास्ट 3-4 years का जो भी हमने प्रोजेक्शंस दिए हैं, द वेरिएशन इज नॉट मोर देन 5%. सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव केयरफुली नोटेड, मैंने कहा था 500 करोड़ से 525 करोड़. So it can go down till 500 crore, it can go up till 525 crore. And we are quite sure of getting it. हो सकता है शॉर्टफॉल हुआ तो 5-10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा. And now the price of metals are stable, so we are confident on margin side also. मार्जिन्स भी जो आपका इसी प्रश्न में आपने मार्जिन्स का भी पूछा था, we are quite confident of maintaining the same level of margins. Okay. So let's presume today margins are nearly 19-20%. You are expecting around the same level for FY24. EBITDA, yes. Yeah. EBITDA margins. In fact, it would be wrong to say we expect 18-19 or 19-20. It should improve. Okay. है ना. आप समझे क्यों? यदि मैं 410 करोड़ या 415 करोड़ से 515 करोड़ पे जाता हूं तो वी अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 25%. नोवेयर इन इंडिया किसी भी कंपनी का ओवरहेड्स 25% से बढ़ने वाला है. Your salary, wages, etc. don't increase by 25%. That is the major part of your expenses or electricity cost or operating cost. ये सब on an average between 8 to 12% बढ़ती है. So when the growth of the company is more than the growth in overheads, your profitability increases manifold. So on an average, if we are able to do more than 500 crore, there should ideally be an improvement in margins. However, we are known to give conservative projections. That is why I would say when मेरे से ज़्यादा धर्मेंद्र, so when he says 18-19 possible है तो 18-19 हो गए and improvement उसमें हो सकता है. So when you answered the previous question, something I noted is that problems in execution. This is something, let's say, again, sorry for taking this example again and again, but infra companies, we have seen they have an order book of, let's say, presumably, hypothetical situation, 8,000 crores, but they have a single order worth 2,000 crores, which is delayed execution. They're not able to execute, maybe because of encroachment, because of environmental clearance issues, because of some funding issues, maybe because they're doing a hybrid annuity model kind of project. But in your case, from what you just told us, is that the orders are spread across countries, one. Secondly, your average order size is somewhere around 25 to 50 crores, which is very small compared to your huge order book of 700 crores, right? So this... Let me correct. Average order size is between 1 to 4 crore, 5 crore, not more. Okay. So we are talking of more than 300, 400 orders in 700 crore order book. एक ऑर्डर 50 करोड़ का एक ही है. उसके बाद मोस्ट ऑर्डर्स आर बिलो 15 करोड़ एंड मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर आर अराउंड 1 करोड़. सो ये जो आपने कहा एक या दो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा तो 700 करोड़ में से दो प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे तो भी वो 500 करोड़ का अफेक्ट नहीं करेंगे. This is the biggest difference because infra company, one project is delayed and their company is gone. Very big. He faces difficulty. So yeah. Our size of project is very small, not so big. Yes, very dispersed. And yes, Anuj. Markets dispersed and quantity of orders also high, so the risk is less.
तो मिस्टर पटेल, मैं आपके प्रेजेंटेशन में देखा कि आपने एक स्लाइड दिया है जिसमें रेवेन्यू पोटेंशियल, कौन सा प्लांट कितना रेवेन्यू पोटेंशियल कर सकता है। तो क्लब टुगेदर द टोटल इज 600 करोड़। तो हम लोग ऑलरेडी 700 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठे हैं। तो आई मीन डज इट मीन कि कंपनी बहुत जल्दी कैपेसिटी बढ़ाने पे काम करेगी? See, हम every year in September this year also we are opening one plant. In next year 2024 we are opening a plant in Chennai. In 2025 we are opening a plant in Houston. So every year we are adding facility because our ultimate target is to touch 1000 crore by 2029-30. So we are incrementally adding facilities to cater to that growth. We are also acquiring a company in UK and वहां पे भी हम facility improve कर रहे हैं. So इन सबसे facility improvement incrementally करने से और worldwide करने से we are able to meet higher capabilities in revenue. near to that. ओके, तो सर जैसे मैं जैन सर इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे शायद। जैसे मैं बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 8 करोड़ के आसपास का CWIP दिखाई देता है। तो क्या ये वो जो नई फैसिलिटी आप जो सितंबर 23 में इनॉग्रेट करने की बोल रहे हैं उसी से रिलेटेड है? हाँ, CWIP बट 8 करोड़ नहीं है सर। Okay, इसका 8 करोड़ है। I will check that again, no problem. But the majority of the CWIP as on 31st March 23 is relating to the new facility that you are going to inaugurate in September 20. Okay. तो सर ये पटेल सर जो आपने अभी बताया कि आप यूके में एक्वायर करने वाले हैं कोई कंपनी, इसके बारे में कोई आप डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? ह्यूस्टन के बारे में आपने बोला यूके में कुछ एक्वायर करने वाले हैं। UK में we are acquiring a company called Waterfront. We are already working with that company. उसका 30% of जो रेवेन्यू है हमारे प्रोडक्ट से आता है। यूके में एक हमारे कॉम्पिटिटर थे हैमबेकर जो मोर देन 100-year-old कंपनी थी which has closed down and वो बैंकरप्ट होने से क्लोज डाउन हुई है। एंड हमको लगता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर द यूके मार्केट। हाउएवर वाटरफ्रंट की खुद की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है एंड प्रोडक्ट वाइज भी कैपेबिलिटी नहीं है। सो वी offered them an option to acquire 80% of their equity, 20% उनके खुद के पास रहेगी क्योंकि वो लोग प्लांट चलाएंगे, वो लोग ही देखेंगे, बट हमारे गाइडेंस के अंडर में करेंगे। एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम आने वाले 4 साल के अंदर उनका टर्नओवर करंटली 27 करोड़ है, उसको हम 100 करोड़ तक ले जा सकेंगे अंडर आवर गाइडेंस, अंडर आवर सपोर्ट एंड स्ट्रेटेजी। राइट सर। सर मेरे को थोड़ा सा एक आपके जो फॉरेन ऑपरेशंस है उसके बारे में, जनरली हम लोगों ने ये बहुत सारी कंपनियों में देखा है कि बूम पीरियड में मैनेजमेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और ग्लोबली एक्विजिशन करती है एंड आफ्टर दैट वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है आने वाले कई सालों तक। एंड वी हैव सीन इन लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे अल्टीमेटली वो कंपनियां बैंक्रप्सी में जाती है एंड इट बिकम्स अ ड्रैग ऑन द इंडियन पेरेंट कंपनी एज वेल। इन दिस कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के बिहाफ में कि हमारा जो यूएस का ऑपरेशन है वो कितना सक्सेसफुल है। इसमें मैं एक बैकग्राउंड और ऐड कर देता हूँ। एवरीबडी इज सेइंग कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, चाइना में मैन्युफैक्चर करना है क्योंकि वहाँ की कॉस्ट कम है। सो हाउ डज इट मेक सेंस फॉर अस टू मैन्युफैक्चर इन यूएस? एंड एज यू आर सेइंग कि आप ह्यूस्टन में नया प्लांट भी लगाने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा समझाने में हमको हेल्प कीजिए। हाउ वी आर सक्सेसफुल इन यूएस ऑपरेशन एंड हाउ सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ नंबर द यूएस ऑपरेशंस आर, और अगर आप मार्जिन को भी कंपेयर कर सके इंडियन ऑपरेशन से। तो देखिए, सबसे पहला तो आपने कहा कि जो फॉरेन एक्विजिशन करते हैं वो पेनफुल होता है। यू आर वेरी राइट। आवर यूएस एक्विजिशन वाज वेरी पेनफुल। हमने 4 साल सफर करा है
यहाँ तक कि कई इन्वेस्टरों ने हमको बोला कि भैया वो बेच दोगे तो तुम्हारी मार्केट वर्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, लोग ये नहीं समझते कि जब भी आप फॉरेन में कंपनी अक्वायर करते हैं तो आप एक नए मार्केट में जा रहे हैं, आपको उतना डेप्थ में सब मालूम नहीं है, तो आप काफी मिस्टेकें करते हैं। हमने भी फेयर शेयर ऑफ हमारी मिस्टेक्स करी। 4 साल तक यदि हमने पेशेंस नहीं होता तो इवन बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन होता था कि यार ये कहाँ घुस गए हम। सो वी हैव नाउ ओवरकम दैट। अब देखिए कि आज वी आर टारगेटिंग दिस ईयर, वी आर टारगेटिंग $25 million रेवेन्यू इन अमेरिका। माय ऑर्डर बुक इन अमेरिका इज $37 million। ठीक है, आज लास्ट ईयर हमने क्लोज टू $1 million इन प्रॉफिट करा अमेरिका में, उसके पहले $0.5 million करा था। एंड जैसे जैसे मेरा रेवेन्यू अमेरिका में बढ़ता जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बट शुरू के 4 साल में लॉसेस था। सो ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है आप जब अब्रॉड जाते हो। However, you should be clear of your strategy and you have to stick firm to your ideas. आज हम 4 साल में थक के निकल गए होते तो हम भी लॉस करके निकल गए होते। आज we have turned around the company. We are now the second year of consistent improvement in profitability. This year we expect significant improvement in profitability क्योंकि our revenues will increase by more than 25%. So ये ओवरहेड वाला वहां पे भी लागू होता है, ज्यादा लागू होता है क्योंकि वहां पे ओवरहेड हायर है। सो आई वुड से कि वी हैव पास्ड दैट लिटमस टेस्ट। जो दूसरी कंपनियों को प्रॉब्लम आया है वी हैव पास्ड। सेकंड पॉइंट, हम अमेरिका में आज भी 30 to 35% ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। 65 to 70% प्रोडक्शन तो इंडिया से होके जा रहा है। तो मैं कोई अमेरिका में इंडिया जितना बड़ा प्लांट बना के नहीं बैठा हूं। मैं जो अमेरिका में प्लांट बना रहा हूं दैट इज ओनली टू केटर टू फास्ट डिलीवरी वन, क्योंकि इंडिया से कुछ भी अमेरिका भेजता हूं आज मेरे को 2 से 2.5 महीने लगते हैं। तो यदि प्रोजेक्ट में 4 महीने में डिलीवरी चाहिए तो इंडिया से हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम भी लगता है। सो ऐसी चीजें अमेरिका में बनाएंगे जिसको फास्ट चाहिए आपको 4 महीने में, 3 महीने में। और दूसरा, जैसा हमारे यहाँ मोदी जी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वैसा अमेरिका में भी मेक इन अमेरिका। यदि आपको अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट से पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट की एक कंडीशन है कि आपको सर्टन आइटम अमेरिका में ही बनवानी पड़ेगी। तो वो आइटम मुझे अमेरिका में ही बनानी पड़ेगी, मुझे भी अमेरिका में बनानी पड़ेगी और बाकी सब कंपनियों को भी अमेरिका में बनाना पड़ेगा। तो उसका प्राइसिंग तो अपने आगे बढ़ जाना है क्योंकि अमेरिका के प्राइस कॉस्ट लेवल्स बहुत हाई है। तो जो चीज मैं इंडिया में बना के अमेरिका बेचता हूँ वही चीज अमेरिका में बनाने जब बेचने निकलता हूं तो 2 times हो जाता है, 3 times हो जाता है। So that does not affect us. But yes, you are right, because we are at a growing stage. Our margin in America presently is not the same as in India. So आप देखेंगे लास्ट ईयर मेरा पैट मार्जिन 5% था, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इस साल we expect it to go to 7-8%. And in time to come we will go about 10%. But क्या वो इंडिया जितना हाई रहेगा? I cannot say with confidence क्योंकि अमेरिका में overhead is high. Until my rate of growth in America is high, much higher than overheads, उस टाइप का प्रॉफिट मार्जिन जो मुझे इंडिया में है वो नहीं मिले। राइट सर, राइट। एक्सपेंशन ह्यूस्टन में प्लान है, तो ह्यूस्टन में प्लांट इसीलिए डाल रहे हैं कि जो ऑरेंज में हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है वहां पे हमको लोग नहीं मिल रहे, वेल्डर, फिटर, इंजीनियर नहीं मिल रहे, इसलिए हम ह्यूस्टन में प्लांट डाल रहे हैं जहां पे आपको इस टाइप के वर्कर्स इजीली मिल जाते हैं।
एंड जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से हमको दोनों जगह प्लांट रखने पड़ेंगे फ्यूचर में, टू केटर टू नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो एंड टू साउथ अमेरिका ऑल्सो. So Houston will cater to South and West America, and Orange will cater to East and Central America. Right, sir. We have already office in Houston. ओके ओके. तो सर जो मैं समझ पाया कि पैट लेवल पे हमने यूएस 5% का मार्केट और वॉल्यूम बढ़ने के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 to 8% FY24 में रह सकता है. तो अगर मैं इसको कंपैरेबल बनाऊं डेटा को, तो FY24 में इंडियन ऑपरेशन का पैट मार्जिन हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Nearly double. ओके. राइट सर. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, थोड़ा सा मेरे को इंडस्ट्री डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आफ्टर कोविड हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री में एंटी चाइना सेंटीमेंट, चाइना +1 सुन रहे हैं. तो आपकी इंडस्ट्री में इज चाइना अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द एक्सपोर्ट मार्केट? If yes, then are you seeing any increase in order book or increase in inquiry because of that? See, if you understand our industry, we are not in mass production. हम mass production में नहीं है. China specializes in mass production. दूसरा, हमारे केस में it is lot of correspondence which is involved, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अप्रूवल लेना पड़ता है, डिजाइन अप्रूवल लेना पड़ता है. इसका मतलब है लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज इन्वॉल्व. हम जिन मार्केट में वहां सब जगह इंग्लिश में ये कम्युनिकेशन करना पड़ता है. अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना दे आर वीक इन दैट, सो दे डू नॉट कम इनटू प्रोजेक्ट्स वेयर कस्टम मेड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसलिए हमारे को चाइना से कंपटीशन नहीं है बहुत ज्यादा. आज हांगकांग में हमारा मार्केट शेयर 70% से ऊपर है, स्क्रीन्स में और गेट्स में. हांगकांग इज चाइना. तो व्हेन आई एम नॉट ट्रबल्ड इन हांगकांग, आई डोंट सी ए बिग प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड फॉर नेक्स्ट 10 years. हो सकता है 10 साल में चाइना इज इन इंग्लिश एज गुड एज इंडिया इज, but today they are not, and so I do not see such a big competition from China. दूसरा, we have also seen, जैसा कि मैं चाइना में इक्विपमेंट नहीं दे पाता हूं क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट उनके म्युनिसिपल प्रोजेक्ट में अमेरिकन और इंडियन इक्विपमेंट अलाउ नहीं कर रही. सेम स्टेज आने वाला है कि दूसरी कई गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट अलाउ नहीं करेगी. फॉर्चुनेटली फॉर अस एंड इंडिया, ऐसा स्टेज अभी इंडिया के साथ में दूसरी गवर्नमेंट्स का नहीं आया. सो मुझे नहीं लगता है कि हमें चाइना से बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा. राइट सर, राइट. तो इस डिस्कशन के सर लास्ट सेगमेंट में आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन. यू कैन कॉल इट अ रैपिड फायर राउंड. ठीक है, आपको सोचना नहीं है और एक सेंटेंस में उसका जवाब देना है क्विकली. 5 साल में जाश की सेल कितनी होगी? डबल. Okay. Biggest mistake that you have done as the promoter of the company? Not getting best manpower. अब आने वाले सालों में कौन सा नया प्रोडक्ट हम देख सकते हैं आप लोगों? Related to water industry, we will like to go for tertiary treatment में जो equipment लगते हैं वो. Sorry sir, which tertiary treatment है ना, water reuse. Yes. तो आने वाले सालों में इंडिया में तो इतना ज्यादा नहीं है, पर 10 साल बाद वाटर रीयूज नेसेसरी हो जाएगा और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हम उन इक्विपमेंट का बनाना चालू कर दें. राइट सर. बिगेस्ट थ्रेट दैट यू सी? मैन पावर. सी, हम कस्टम बिल्ड इंडस्ट्री में है. कस्टम बिल्ड इंडस्ट्री में नॉलेजेबल एक्सपीरियंस पीपल की बहुत आवश्यकता है. इंडिया में एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल लोगों की कमी होते जा रही है, ऐसा मेरा सोच है. सारे जने सॉफ्टवेयर और उस इंडस्ट्री में जा रहे हैं. सो
गुड मैन पावर ये सभी इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए एक थ्रेट रहने वाला है। Right, sir. Right. So, Shriram, you want to say anything? Sir, in the previous, I think Anuj asked that question regarding the desalination process. I had got out of the call because of my network issue. Anuj, can you, just 1 minute it will take. Can you just ask the question? And so can you please answer them? We will edit it and keep it in the previous. ओके सो उन्होंने पूछा था कि डिसैलिनेशन में हमारा कितना स्कोप होता है। So just one Sir, second. let me Anuj, answer the question, then you answer. you ask, and Pratik will answer. Okay. So, Mr. Patel, you mentioned desalination, और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि desalination वर्ल्ड ओवर नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, और जैसा आपने मुंबई के बारे में बताया 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक टिपिकल desalination प्रोजेक्ट में जैश का कितना रोल रहता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई प्रोजेक्ट। अगर मुंबई में आप लोग प्रेफर्ड सप्लायर होते हैं ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के, तो आप कितनी वैल्यू का माल प्रोवाइड करोगे इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 4000 करोड़, एंड वर्ल्ड ओवर आप डिसैलिनेशन में क्या अपॉर्चुनिटी देखते हो? तो जो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें एनीवेयर फ्रॉम लोअर साइड में 8 करोड़ तो हायर साइड में 15-16 करोड़ के हमारे प्रोडक्ट लग सकते हैं, है ना। अवर प्रोडक्ट जो हम सी में से जब पानी लेते हैं वहां पे गेट्स, स्क्रीन्स और वाल्व्स उसी में लग रहे हैं। आगे जाके डिसैलिनेशन का क्या प्रोसेस है उसके मुताबिक हो सकता है कि और प्रोडक्ट्स लगे तो थोड़ा क्वांटम बढ़ सकता है। बट अभी जो हमको इंडिया में जो डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स मिले या अब्रॉड में भी जो मिले हैं उसमें हमारा क्वांटम 8 से लेके 14-15 करोड़ तक का रहा। Okay. So very basic question for our audience and for our knowledge also. The water we are drinking, what percentage actually comes from desalinated source and what percentage comes from groundwater? इंडिया में तो अभी भी 1 या 2% ही डिसैलिनेशन से आता होगा, बट इफ यू लुक ऑफ मिडिल ईस्ट तो वहां पे 90% डिसैलिनेशन से आता है। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारे तरफ उनको बारिश गिरती नहीं है, बहुत कम गिरती है, वो पानी कहाँ से लाएंगे। सो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे डिसैलिनेशन से ही आता है। हमारे लिए ऑप्शन है, वी स्टिल हैव रेनफॉल, we have Himalayas, we have natural resources, but we are utilizing our natural resources as well as spoiling our natural resources। इसलिए कोस्टल बेस्ड सिटीज जितनी भी है उनको धीरे धीरे डिसैलिनेशन पे फोकस करना पड़ेगा। Absolutely. Middle East, they need to create fake rains using seed clouding and using nitrogen, pumping nitrogen to the clouds. So thank you very much. It was a lovely interaction, and we look forward to seeing the growth of the company. And thank you for spending the time. We spoke about a lot of areas, industry opportunity. We touched on China a bit, and we even talked about the export opportunity you have, the forward guidance, the margins you're expecting, what is the impact of commodity prices, the dispersion of orders. So many things to unpack for anyone listening to this. Wholeheartedly, thank you so much. And we look forward to connecting you at a later stage, sir. Thank you, Shriram. Thank you, Anuj. Thank you.